Hello everyone, this is Seema and I welcome you all in my YouTube channel. Friends, today we are going to discuss about a prelim shot. As I said you कि मैं हर दिन आपके लिए एक prelim shot लेकर के आऊँगी, तो आज आपके लिए एक prelim shot के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, it is related to Deepor Beel, right? Deepor Beel. It was in news recently, so let us see कि how we will cover this topic as per your prelims point of view as well as for my mains point of view. Okay, so let's move forward. So ये जो इमेज आप देख रहे हैं बैक में, इट इज़ ऑफ दीपोर बिल. ये एक्चुअली एक आपका वेटलैंड है और आप कह सकते हैं ये एक लेक का इलाका है जो अभी रिसेंटली आपका न्यूज़ में था. ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन ये है कि ये न्यूज़ में क्यों था, वाई इट वॉज इन न्यूज़. तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दैट इज़ MOEFCCC, इन्होंने इस दीपोर बिल का जो इलाका है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है. ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन अभी इसे घोषित किया गया है किसको, दीपोर बिल को, जो कि क्या है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. कहाँ पर है, आसाम में है. और किसने घोषित किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के बन सकते हैं कि इको सेंसिटिव जोन कौन सी आपकी मिनिस्ट्री है हु डिक्लेयर द और हु नोटिफाइड द eco sensitive zone. तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इट इज़ द मिनिस्ट्री हु डिक्लेयर्ड द इको सेंसिटिव जोन्स, राइट. अब दीपोर बील ये कहाँ पर है, तो आंसर इज आसाम. आपको मैच द फॉलोइंग में दे सकते हैं 1 2 3 4. मैच दीज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विद द स्टेट. तो अगर दीपोर बिल आपके सामने होगा तो देन यू कैन आंसर इट इज़ इन आसाम, राइट. चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड. नाउ it was in news, we have seen why it was in news. Now how we will cover this topic, or we will cover this event or this news event, how we will cover this news event, right. Firstly we will see about the Deepor Beel, then what is the significance and why it is important, then what are the eco sensitive zones, right. It is recently declared as eco sensitive zone. Then we will see what are the eco sensitive zone. Now what are the concern, actually क्या हुआ, क्या कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से इसे हमें एक इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित करना पड़ा. ठीक है, नेक्स्ट विद दिस वी विल ऑल्सो सी अदर नेशनल पार्क्स एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और the other protected areas which were present in Assam. So in these 5 heads we will cover this whole news, right. So let us move forward with the first heading, that is about Deepor Beel. So Deepor Beel is actually one of the largest freshwater lake in Assam. So first question is, it is a freshwater lake, not a brackish water lake, not a saline lake. It is a freshwater lake and it lies in Assam. It is state's only Ramsar site. You all know about the Ramsar site, Ramsar Convention. So in Assam, if I talk about the Ramsar site, so it is the only Ramsar site which is available in the Assam, right. Now it is an important bird area also by BirdLife International. You know that BirdLife International is an organization and it declares a specific area to as bird area, important bird area, to protection of the migrant species. So the Deepor Beel is also a important bird area. Now from these 3 statements आपके again prelims का question बन सकता है. Number 1, we can give you the question like that कि consider the following statement about the Deepor Beel. It is one of the largest brackish water area or brackish water lake in Assam. So that statement will be false because it is the largest freshwater lake in Assam. So and next, it is one of the Ramsar site in the Assam state. So no, it is not one of the Ramsar site. It is the only Ramsar site in the
Assam state, right? It is also an important bird area. Yes, that will be true because it is also an important bird area which was declared by BirdLife International. Now यहाँ से एक और हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि हु डिक्लेयर्स द बर्ड एरिया, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया को कौन डिक्लेयर करता है? सो द ऑर्गेनाइजेशन इज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. सो नाउ इट इज़ योर होमवर्क दैट यू सर्च अबाउट द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, right? Next, it is located towards the southwest of Guwahati city in Kamrup district. So, अगर इसकी लोकेशंस आपसे पूछी जाएगी तो गुवाहाटी विच इज़ द आपका बिग सिटी ऑफ द असम स्टेट, उसके साउथ वेस्ट में है ये, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? तो कामरूप डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट द दीपोर बील. नाउ next question is why it is important, or Deepor Beel, what is the significance of Deepor Beel? So it is important because it constitutes a unique habitat for aquatic flora and avian fauna. ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? बिकॉज यहाँ पर हमें एक यूनिक हैबिटेट मिलता है एक्वेटिक फ्लोरा के लिए एंड एवियन फोना के लिए, तो इसीलिए इसे बर्ड लाइफ एरिया घोषित किया गया है. इट इज़ डिक्लेयर्ड एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बिकॉज it is very unique habitat, or it provides a unique habitat for avian fauna, right? Next, it has both biological and environmental importance besides being the only major stormwater storage basin for Guwahati city. It is not only biologically important, it is environmentally also important, and it is also a storage basin for the Guwahati city. What is the need of storage basin? Storage basin, like whenever there is a flood, तो आपके पास अगर एक स्टोरेज बेसिन है तो आपका जो इलाका है वहाँ पर ज़्यादा फ्लड नहीं आ सकती है, या जो फ्लड का आपका बहुत ज़्यादा disastrous effect है, that could be reduced if you have a storage basin in that area. So it is important in this respect also, right? Next, it provides a means of livelihood for a number of local families. Why it provides a means of livelihood? Because it is a lake. I said it is a lake. In the lake we have flora as well as we have fauna. Fauna like fishes and all. So the pisciculture is very developed in that area, which provides a means of livelihood to local families. And next is it could be a very good tourism site also, right? It could be a very good tourism site also. So tourism also provides the means of livelihood to the local families. So in this way it is important. Another importance of Deepor Beel is, as I said, there is fishes, or there is a good pisciculture. So vital for protein, we can get vital protein in the form of fish, which is very important for the communities, और दे गेट अ गुड न्यूट्रिशन वैल्यू, राइट? तो अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू मिल सके कम्युनिटीज़ को, इन दिस वे इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, right? So this was about the importance of Deepor Beel. Now move forward towards the what is eco-sensitive zone. So as I said, eco-sensitive zones are declared by Ministry of Environment and Forest, Climate Change. वो इसे डिक्लेयर करती है. एंड होता क्या है इको सेंसिटिव जोन? इको सेंसिटिव जोन इज़ 10 किलोमीटर एरिया अराउंड एनी प्रोटेक्टेड एरियाज और नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ठीक है, हर एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया होता है जहाँ पर लगता है कि विच इज़ वेरी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल, तो वो आपका इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है. एंड इट वॉज notified by Ministry of Environment under which article? So under the article of Environment Protection Act 1986. You will be remember the name of the act. किस एक्ट के अंतर्गत इको सेंसिटिव जोन्स को घोषित किया जाता है या नोटिफाइड किया जाता है?
ठीक है। द पर्पस इज़ कि वहाँ पर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सच एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं उन्हें रेगुलेट किया जा सके, उन्हें मिनिमाइज़ किया जा सके उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट को। सो इस पर्पस के साथ में आपका डिक्लेयर किया जाता है इको सेंसिटिव जोन, राइट। इन सम केसेस अगर ऐसा लगता है कि 10 किलोमीटर के बियॉन्ड भी हमारा एरिया बहुत फ्रजाइल है, किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास अगर हमें लगता है कि 10 किलोमीटर के बाद एरिया बहुत फ्रजाइल है, देन इस लेंथ को 10 किलोमीटर से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही हो, ठीक है। नाउ द कंसर्न इज़, नाउ वाई, वॉट आर द कंसर्न क्या है इसके। तो कंसर्न देखिए, रिसेंटली क्यों इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। रीज़न ये है कि यहाँ का जो वाटर है वो टॉक्सिक हो रहा है एंड इट हैज़ लॉस्ट मैनी ऑफ इट्स एक्वेटिक प्लांट्स, और उसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स यहाँ पे लॉस हो गए हैं, और एलिफेंट्स का जो नंबर है वो भी डिक्रीज़ कर रहा है। द रीज़न इज़ कि जब आपका वाटर टॉक्सिक है तो एक्वेटिक प्लांट्स नहीं होंगे, जब एक्वेटिक प्लांट्स नहीं होंगे तो जो एलिफेंट है दैट वाज फीड ऑन दीज प्लांट्स, उनका नंबर डिक्रीज़ कर जाएगा। अनदर कंसर्न इज़ दैट इट इज़ थ्रेटन्ड बाय अ रेलवे ट्रैक। यहाँ पर क्या है, एक रेलवे ट्रैक है जिसे डबल भी कर दिया गया है, यानी 2 लाइन भी कर दी गई है और उसे इलेक्ट्रीफाई भी कर दिया गया है, ठीक। तो ये भी एक उसका रेलवे ट्रैक होगा, तो वहाँ से रेलवेज़ निकलेंगी, रेलवे निकलेगी, रेल निकलेगी, तो वो भी आपके इस जोन को या इस इलाके को हार्म कर रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पर काफ़ी सारा गार्बेज डंप किया जा रहा है, ह्यूमन हैबिटेशन ने इसे एनक्रोच कर लिया है। अलॉट्स ऑफ कमर्शियल यूनिट्स यहाँ की जो सदर्न रिम है उसमें आपकी बनने लगी हैं, तो ड्यू टू दीज रीजन्स इट इज़ बिकमिंग अ इको सेंसिटिव जोन। Now come to the other important protected areas in Assam. What are the other important protected areas in Assam? So we start from the west and move towards the east. So it is, one is your Raimona, another is your Manas, then this is your Deepor Beel, Orang, Nameri, Kaziranga, Dibru Shukhova, and Dihing Patkai. So these are the important protected areas which lies in the Assam. We once again see Raimona, Manas, Orang, Deepor Beel, Nameri, Kaziranga, Dibru Saikhova, and Dihing Patkai. So these are the protected areas which lie in the Assam. ठीक, आपको क्वेश्चन कुछ भी दिया जा सकता है। अरेंज दीज प्रोटेक्टेड एरियाज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो हियर वी हैव कवर्ड the protected areas of Assam. We have started with the Deepor Beel, then we have seen what it is, then we have seen about the eco-sensitive zones, then about the other important protected areas in Assam, then the concern why it is declared as eco-sensitive zone and the significance of the Deepor Beel. So here I am completing my today's prelim short. I will meet again to you with a new prelim short. Till then, thank you so much and have a nice day.